चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन। काम करता है, मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। थोड़ा बहुत जितना मैं समझने का ट्राई कर रहा हूँ, जितना हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ इससे पहले बिहाइंड द सीन तो भी कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ है। तो आप हैं रवि कांत जी, रवि कांत शर्मा। रवि कांत शर्मा जी, आप बेसिकली बिलोंग करते हैं? So I'm born in Rajasthan. Born in Rajasthan. Brought up in Kolkata. ठीक है, Studied in I've done my graduation till graduation I was there in Kolkata. ठीक है, So born in Rajasthan, brought up in Kolkata. Right. Higher education from Bangalore. ठीक है, Then worked in Pondicherry. worked in Then again Pondicherry, back to Bangalore. back to Bangalore, And then to Pune. And then from Pune again back to Bangalore. ठीक है, इतना ज्यादा घूम चुके हो आप। It's travel, you can say it's like an open delta, which is not ready to get closed. Interesting. It's कुछ like, वर्ड्स हैं जो हमारे मतलब कि समझ नहीं आएंगे, सिंपल वाली पब्लिक को, ओपन डेल्टा काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, you can read about it. आई कैन रीड, तो मैं तभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में इसको निकाल करके हाँ ये यार ये समझ नहीं आया था, बाद में देखता हूँ। Sure. ठीक है, तो फिर इस पर्टिकुलर आप डिफरेंट लोकेशन से घूम करके वापस बैंगलोर आ चुके हो। उसके बाद आप जो है 10 लैंग्वेजेस जानते हो, और वो आपने सीखी है मतलब कि लोगों को देख देख करके ही। देख के it's called polyglot. So that is Polyglot, they have I have a knack of understanding things, which I like. I like just not understanding languages. I like understanding things, right? Okay. Because everything to you at a point of time is unknown. And so if in case you just keep yourself open for understanding, I believe Correct. you are an explorer then, right? Because that's where you will explore a lot of things. समझ के आप ये रास्ते से आ रहे हो, ये रास्ते से जा रहे हो, जिंदगी भर उसी वही रास्ता पकड़ के रखा आपने कि आ रहे हो जा रहे हो। So I believe you'll not be able to see a lot of other ways, or maybe which is more difficult than this way, or maybe which is more experience that can add on to experiences in short. Correct. Right? So that is what so this is how it is in short. डिफरेंट लोकेशन में घूम लिया आपने, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपने एक्सप्लोर कर चुके हो आप। डिफरेंट ऑब्वियसली लैंग्वेज का मतलब है डिफरेंट तरह के लोगों से बात करने को मिल गया होगा, है ना? और So just to interrupt, so basically when I was in Kolkata, never traveled. So at that point of time, for me, South Indians was South Indian, right? And then I traveled to Bangalore, and then I met here, Kannadigas, I met Teluguites, I met Malayalis, I met Tamilians. So that's why I understood here something which I used to call South Indian is actually a Tamilian or a Teluguite or a Malayali. So it's not South Indian, they are different, in a lot of things. And so that's like, that is experiential learning I was just speaking about. जैसे कि मैं अगर हिमाचल की बात करूँ, हिमाचल में डिफरेंट लैंग्वेज, इवन हिमाचल में ही बहुत सारी लैंग्वेज, डोगरी हो गया, Exactly, राइट? exactly. और उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, मतलब जो मैंने भी समझने का ट्राई किया है अपने दोस्तों से भी, yes, है ना? राइट? And broadly people call it Himachali है। हिमाचली, हाँ। हिमाचली में क्या है, that is the fun, वहीं पे मजा है। ये तो पॉइंट है। Because इसको just knowing the headline of a story, it's like just reading the headline of the newspaper, right? Wherein you don't know the details of the story, right? And that is where the fun lies, right? So that is how. Right, ठीक है। तो ये आपके लैंग्वेज के बारे में हो गया, या आपके बेसिक डिफरेंट जगहों पे घूमने के लिए हो गया। उसके बाद आप जो है एक कंपनी में एक पोजीशन होल्ड करते हो, मतलब कि जीरो से आपने स्टार्ट करके मल्टीपल वो चीजें गेन किया, मतलब ऑलमोस्ट अब 100 या 150 या 200 लोगों को हैंडल भी कर रहे हो। इतना तो लोगों अंडर आपके? I have handled a very big span, maybe as a manager as well, as an ASM. When I was in ASM training, so at that point of time I used to handle somewhere around 250. 250 is a very good number. 250 so वहाँ से वो सीखा है कि it is very easy to work actually, but it is the most difficult task on earth as per me is to make someone else work. Point, right? मतलब ये तो पानी का ग्लास चाहिए, गया मैं उठा के लेके आ गया। अब मैं तेरे को बोलूँ कि तुषार go and bring that glass of water for me, so I would need to create a pitch for that, I have to convince you to go and do that, so it's so difficult, isn't it? ऐसा नहीं कि मैं तेरे को बोला जा तुषार लेके आया तू उठा लेके आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, so it's very difficult. हाँ, मतलब वो पोजीशन भी चाहिए, और वो एज एन ऑब्वियसली बात है कि और चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर चीज का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने गेन की हैं इस थ्रू आउट जर्नी से, और इवन आपकी एक फैक्ट्री भी रही, आपने बताया था इधर आपका फैक्ट्री में। My factory, I would say, I was mentioning that in Pondicherry, basically, the place where I started my first job with Pondicherry. So I worked there in Servo Packaging Limited for 1 year. So I started there, there as a maybe less than executive, and after a point of span, I was handling the entire factory unit. From the production, till the dispatch and delivery.
ठीक है. Right? So I was controlling everything, and the turnover was very good. Wherein I used to handle 2 shifts, 2 shifts of 100 people. So 100 सुबह आते थे और 100 शाम को आते थे. Right? So means that was very पुराने जैसे नहीं बोले जैसे फैक्ट्री चलती हैं कि अटेंडेंस से लेके the work task and the productivity, the output, right? Everything is something which I used to look after, and that was maybe the most experiential learning journey for me to something start with. बहुत सारे लोगों का ये इतने खुश नसीब नहीं होते कि they start with something कि starting में ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाए. Right? So that is what I called my first job. Yes, it was difficult, but most experiential I would say. वहाँ से काम करना सिखाना आया मेरे को. वहाँ सिखाना आया. मतलब करवाना सिखाना है कि how to make people work. Alright. तो ये सारी चीजें करने के बाद अगर थोड़ा बहुत अगर आप खुद के बारे में थोड़ा आप एक बार बताओ, मान लो कि आप क्यों हो इस दुनिया में, क्या करने आए हो, अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो. मान लो कि अभी आप किस जगह जॉब कर रहे हो ना, वो नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, मतलब आप में वो क्या स्किल है. बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. समथिंग व्हिच maybe I would say I'm not 100% prepared with, but still the truth comes out when you're not prepared. That's what I want. So basically, if in case I would have not been doing this job, so for sure I would have been spending a lot of time with something related to animal. Acha, okay. Right, means I would have been doing that because I think that I can understand. Means suppose my pet, I have two pet dogs. So one is Google and the second one is Beagle. अच्छा, right? Okay. So they are father and son. So जैसे अगर छोटा वाला आके मेरे तकिए के पीछे खड़ा है, so I can understand वो मेरे को बोला भाई थोड़ा सा साइड दे पीछे जाना है. अच्छा. I can understand them. This is sort of a communication which I can have. So I have a very likability towards it. I wanted to work for something related to when जब बच्चे थे सबका पुलिस पायलट कुछ बना रहता है. So I wanted to work for maybe National Geography or maybe Discovery, something related to that. Man in the Wild एक आता था ना आप that interaction with nature, maybe this place also says a lot about me. ठीक है. तो मतलब आप कह रहे हो कि आप अगर अभी जो भी कर रहे हो वो नहीं कर रहे होते तो इनडायरेक्ट आप एनिमल से something related to nature, animal. हाँ, नेचर है. इसका एक ना मैं इस कॉन्वर्सेशन को अगर काउंट करवाना हो, ठीक है, आप अगर कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ उस चीज़ का, ठीक है, जैसे कि अगर हम बैक इन टाइम जाते हैं, कॉलेज में चलते हैं, ठीक है, अभी के लिए लेट्स गो बैक टू कॉलेज, ठीक है. तो कॉलेज टाइम में आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ें नहीं करते, राइट. तो ऑन दैट पर्सपेक्टिव अगर कोई भी थर्ड पर्सन हमें देख रहा है ना, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, राइट, ठीक है, और हम अपने उस कॉलेज लाइफ की कुछ चीज़ों को बता रहे हैं कि यार ये वाली चीज़ें जो है ना यार करेगा तो भाई तेरी ऐसे हो जाएगी. यस गॉट इट. समझ रहा वाला पॉइंट है ना. अगर तू ये समझ जाता तो हाँ, है ना, वो जो हमने गलतियां की हैं, maybe something which I would have been aware before itself, the results would have been better. Correct. Right? Correct. Okay. I'm from a college wherein you don't have to go to college. No. Vipasa Basu, Aftab Ansari and all these people has been through this college, Bhawanipur Education Society College. क्या नाम है कॉलेज का? The Bhawanipur Education Society College. ठीक है. That's there in Kolkata, Elgin Road. ठीक है. So I have done my graduation from there. So basically you need not to go to college there. Hardly in 3 years I would have been to college, maybe not more than with attendance not more than 5 days. ठीक है. Except examinations. So कॉलेज में वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल समथिंग व्हिच आई वुड हैव अगर मेरे को कॉलेज में ही अगर कॉलेज के टाइम पे ही आई वुड हैव बीन वेरी श्योर कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है, राइट. आई बिलीव द रिजल्ट्स वुड हैव बीन बेटर देन व्हाट इट इज टुडे, राइट, बिकॉज़ दैट इज द एज वेयरइन द थॉट क्लैरिटी इज नॉट देयर, बिकॉज़ the clarity of thought was not there. So if in case मेरे को ये पता चलता है कि what is something which is my likability, what is something which I want to do in future, and just not take it as a job or a business, something which I'm passionate about, like Tushar Harjia, right? Harjai, sorry. So who is doing this apart from a very hectic schedule, which is pretty impressive, I would say. That's inspired me to come and join this. Thank you so much. जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब अगर अपने को कोई बताने वाला होता उस टाइम पर, राइट, चाहे पेरेंट्स हो, कोई मेंटोर होता, कॉलेज से पहले हमें पता होता. अरे बताने वाले तो बहुत जन थे लेकिन सुनने वाला नहीं था मैं. दिक्कत ये थी. अच्छा, वो माइंडसेट, राइट, that was the mindset, a very adamant mindset that I want to do this and I want to do this. तो कोई कराता भी कहाँ है, वो माइंडसेट क्रिएट ही करने देता हमारे दिमाग में. जैसे कि अगर हम फाइनेंस वाला पार्ट देखेंगे ना,
अगर हम क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हमारा, राइट, हमें सेविंग के बारे में पता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही नहीं। एक्चुअली नहीं पता, मतलब हम लोगों को we were being given with money but we were never being taught how to spend or save it. Right, and that was something which was for us to explore, that how are we exploring with that. So that has been a very again a very experiential learning in my life, that my father used to give me a lot since the childhood. Right, and I used to invest a lot of it in bodybuilding में मैं बहुत इन्वेस्ट करता था, ठीक है, राइट, मींस बैक देयर इन 2010 you can say, अच्छा 10 8 9 10 ऐसा, at that point of time something which I used to invest in my body, right, or something which I used to invest in my supplements, right, in the whey proteins and all, अच्छा, so that was a very major part there, at wherein I used to do it, and that helped me a lot to come up with discipline in life. Although I'm not very disciplined today, right, but yes, whatever the discipline which I have learned is something which I have learned through my bodybuilding days. ओके, ऑलराइट। मतलब अगर कॉलेज की बात करेंगे, आप कह रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो है कि पहले से पता होता, हाँ, कि ये चीजें, मतलब वो क्लैरिटी मिल जाती है, अगर वो थॉट क्लैरिटी रहती तो आई बिलीव और something would have the end product would have been something और इंटरेस्टिंग हो सकती थी, yes, मतलब exactly. जर्नी कह सकते हो। yes, ठीक है, और क्या क्या चीज आपको लगता है कि कॉलेज में खराब है? मतलब कॉलेज वाला सिस्टम अलग है, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। See, basically something which is very prevalent in Kolkata, or maybe as a culture, there are a lot of people who don't get into this thought process, but there are a lot, again, majority who believes in this, is ki we when I came to Bangalore, I saw a lot of graduates doing job, ठीक है, right, कि एकदम just graduation किया है and they're into this job world, right, but हमारे वहाँ पर तो ऐसा देखा, ऐसे मतलब this was something which was a taboo, मतलब वहाँ पे people used to find it very wrong कि भाई तूने पढ़ाई तो नहीं complete की, you just completed graduation, how can I jump into this job वाला and all, scene, हाँ। पैसे वैसे की कमी है क्या, ऐसा कुछ, अच्छा, तो वैसा वाला बैकग्राउंड वो भी सही, म्यूजिक भी सही है ना? सही आ रहा है, गुड, अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहे हैं ना हम दोनों, ठीक है, थोड़ी सी बाकी एक्टिंग कर लेंगे जहाँ पे नहीं अच्छे लग रहे, अभी बता दे, शर्म में नहीं आता है, कुछ बोल दे कि भाई अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है भाई, अच्छे लग रहे हैं, संभाल लो। ऑलराइट, चलिए आगे हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, ऑलराइट, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। इससे पहले हम बात कर रहे थे ऑटो की, खराब कर दिया भाई, ठीक है, ऑलराइट, रोलिंग। हाँ, कि मेरे को ना उससे एक चीज़ याद आई, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन याद आया मेरे को, ठीक है, बताओ भाई। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सुंदर बोलता हूँ क्योंकि हाँ, मैं आई अंडरस्टैंड सुंदर ब्रो, आई कैन रेसिप्रोकेट, मैं भी सुंदर बोलता हूँ, बहुत सुंदर भाई, दिस इज वेरी टिपिकल इन बंगाल, खूब सुंदर, मतलब अगर सपोज समवन इज डांसिंग, राइट, सो they'll call it खूब सुंदर, खूब भालो, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ टिपिकल बंगाली कल्चर। हाँ, तो मतलब सुंदर क्यों बोलते हैं, ये भी एक वो है कि भाई हाँ भाई ये लड़की सुंदर क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं, या फिर ये चीज क्यों इतना सुंदर है, इसका एक रीजन है स्पेसिफिकली, कि क्वेश्चन की बात अगर करें तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन से कुछ ऐसा निकल सकता है जो एक्चुअली हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं निकल सकता है। आई गॉट इट, ठीक है, तो देयर इज अ फ्लो जो आपको रखना पड़ता है सामने वाले के सामने, और वो एक क्यों देना पड़ता है ताकि वो एकदम से पिन पॉइंट हो, ठीक है, तो वो पिन पॉइंट मैं आपको देता हूँ, क्यों देता हूँ इस चीज का, जैसे कि और ये मैंने बहुत ही मतलब डीपर किया था मैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, और वो हिट किया था मुझे क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ मैं आपको पीछे, बता भाई क्वेश्चन, आई एम वेरी ईगर टू नो द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज काइंड ऑफ कि मतलब आपको ना बहुत सोचने में मजबूर करेगा ये, ठीक है, काइंड ऑफ जैसे कि मान लो कि आप कॉलेज में हो, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ के किसी भी टाइम जोन में हो आप, ठीक है, टाइम पीरियड में आप कह सकते हो, चाहे बचपन में हो, कॉलेज में हो, आपके ऑफिस में हो, या फिर यहाँ पे भी हो, ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे ड्राइव होता है, इट्स काइंड ऑफ कि आप जिस जगह पर हो, ठीक है, आप 4-5 लोगों को देखते हो या फिर 10 लोगों को देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, करेक्ट, तो किन लोगों के ऊपर आपको लगता है कि मैं पैसे लगा सकता हूँ कि यार इसके ऊपर मैं पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे 2 साल में डबल, ब्यूटीफुल, 1 साल में डबल, करेक्ट, राइट, चाहे वो आपका दुश्मन ही हो कि भाई ये तो भाई कमीना आदमी है, लेकिन भाई ये कुछ कर जाएगा, करेक्ट, अगर किसी में यू मीन टू आस्क दैट what is that quality which you look into a person, हाँ, right, to invest on, right, okay, तो सेम, अब आप किन लोगों, मैं वही सेम क्वेश्चन पूछूं, किन लोगों को आपको लगता है कि यार ये बंदा तो कुछ कर जाए, ऐसा कोई देखा आपने कि अपने कॉलेज टाइम में, तो स्पेसिफिक डीपर जाना है इस चीज को लेकर के, राइट, कॉलेज में आपके जो भी जर्नी आपको लगा कि यार इस पे यार ये तो बंदा कुछ करेगा बड़ा होकर के, गॉट इट, तो
Mike. Basically, something which I would like to invest on. You know, if in case someone possesses that quality or maybe that characteristic, right, and I want it to be an investing quality. The first thing is hard work. Okay. हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं बना है, कोई टैबलेट नहीं बनी है आज तक जो कि हार्ड वर्क को रिप्लेस कर सके. Right, so I am any day open to invest in hard work. Okay. Right, or because you know that is something which can bring in the core of a result. Or else you know giving up is the easiest thing which we can do. हाँ, ये तो एक आइडल चीज हो गया ना कि अपने को यार हार्ड वर्क करना चाहिए. आपने किसी को देखा है जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है? एक किसी नाम मुझे. My dad. आपके My dad means. Okay. I have seen him still. He wakes up at 4 a.m. in the morning. अच्छा. Right. He'll shave every day. He'll clean his shoes or the sandals or whatever is his attire for the day. Right. He'll ensure that you know he'll do his morning meditation and all. Right. And then he'll start. And his work will end unless the work ends. Okay. Right. So he's the most hardworking, and hard work is something which I've learned, particularly a very doable quality from my father. So hard work is something you know, which my father has taught me a lot. Honesty. Right. Honesty is something which I have genes of honesty from my mother. Right. Means चीजों में. आप झूठ नहीं बोलते हो? Sorry. झूठ नहीं बोलते आप? I try means that you know I said this as an answer in one of my you know interview which I gave you know back then. 13-14 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था and I said it as an answer which was very much appreciated is कि I try not to. अच्छा. कि मेरी strength अगर मेरे को पूछता है कि what is your strength which is your weakness as well, which can serve as your weakness as well, which is my inability to lie. मतलब अगर मैंने रिपोर्ट नहीं बनाई है तो I'll go reportless rather than coming up with something fake as a report, right? Because that is not something which is my work, right? And I would not like to appreciate that. So I try not to lie, but you know, जालिम दुनिया बुलवा देती है. My father used to be the one who used to, you know, give me the pamper. But means he has never raised hand on me till today. And मम्मी ने ऐसा है कि किसी चीज से छोड़ा नहीं. कि मतलब क्या नया चीजें यूज किया? मेरे को तो करछियां हो गई. मतलब these things are very common यार. मतलब क्या बात कर रहे हो? Don't talk small. मेरी मम्मी के सामने मतलब nothing is. जैसे मतलब क्या मारा है? क्या चाहते हो तुम? मतलब क्या चाहते हो ये बताओ. What do you want? Just tell me that and I'll say you yes or no कि मैं इससे मार खाई. हमारा दुख जो है सेम है भाई. मैं समझ सकता हूँ. I can relate to. मैं उन अपनी कहानियों में चला गया हूँ. ठीक है, हम वापिस आते हैं. ठीक है, एक पहला चीज जो आप बेट करोगे वो है हार्ड वर्क, ऑनेस्टी. पापा. ठीक है, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी कहाँ से सीखी आपने? Honesty, my mom. Honesty and being humble, being giving back to the society. Right, that is something which my mom has always taught me. If in case पापा मम्मी अपने पैसे लगा दी. ठीक है, और कौन है जिस पे पैसे लगा सकते हो आप? और कौन है जिस पे मैं पैसे तुषार पे लगा सकता हूँ? जैसी बात है. काफी होनहार बंदा है, सुना आजकल बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं. बड़े-बड़े लाइक्स आ रहे हैं, बड़े-बड़े व्यूज आ रहे हैं. अच्छा, ठीक है, लगा सकता हूँ for sure. And someone else whom I can invest, my childhood friend, my best friend. ठीक है. Dibesh. Right, he is a person I can invest on. मतलब क्यों? The reason is that if in case I ask him something, he will not seek a reason. That क्यों? अच्छा. Right, वो करेगा. Right, he will put his input. His will. Suppose I'm asking him to do something which cannot be good for me, or you know, which is not as per the vision which I have built for that task. Right. So for sure, he will just not do that. Right. He will, if in case it is required to wind up that plan, he'll make me do that as well. He'll make me wind up. तो उसके चक्कर में बहुत पंगे हुए हैं. You know, उसके चक्कर में you know we have been through a lot of situation and the experiential learning. My पंगे and all is something which I define in English these days is experiential learning. ठीक है. Right. So like he's a person I can invest on for sure. I can invest on him. Right. And if in case something which is you know the go getter attitude, he करके ही है. So yes, my brother, my younger brother. Right? He has that go getter attitude. Means everyone knows that he's very jogadu. Very jogadu. Means at night 3 p.m. if in case you need something, right? Something समझ गया हम क्या मंगाए. Anything. अच्छा. Anything you want it. Right? तुम बोलो कि भाई मेरे को ये चाहिए. अच्छा. 3 बजे. अगर वो उठ गया, आप उसको उठा लिए और उठा के you have made him to take that task. He will complete it. अच्छा. For sure, he'll complete it. वो घर नहीं आएगा तब तक. करके ही आएगा ऐसा. ठीक है. So yes, I can invest on him as well. ठीक है, एक 4 चीजें हो गई हैं ये. एक हो गया आपका ऑनेस्टी, सेकंड हो गया आपका हार्ड वर्क,
थर्ड हो गया आपका गो गेटर एटीट्यूड, फोर्थ वन हो गया जुगाड़. गो गेटर एटीट्यूड एंड जुगाड़, यस. नो कि जो लास्ट वाला कि हाँ कुछ भी करेगा, मतलब he'll get anything to get that done for sure. ओके, ये चार चीजें. और कोई चीज आपको लगता है कि यार इस स्किल पे या इस बंदे पे पैसा लगाता है, और कोई है आपको आसपास? Yes, means something which maybe I'm not very good at. Yes, I have improved myself onto this, you know, from the scratch, and I'm still improving. Is politically smart. Politically smart. थोड़ा Right. break करो उसको. Means if in case you ask me the detailing of that, what is something which is to be called as politically smart is, you know, rather just being emotional about a situation. If in case you choose to be practical about it, that is what I call is something which is politically smart. Right. Okay. So which I'm still improving on, still working on, right? And I have improved on, you know, because I see that person who was very politically not smart, right? And I see I myself, yes, this is a developed product. अच्छा. So someone who is politically smart, right, is someone I can invest on, right? And you know, I would like to learn that quality from that particular person. If in case you ask me to name or maybe give that person a face, so maybe I have learned it, you know, amazingly from my recent, you know, bosses. अच्छा. You know, not to name one for sure, but from my recent bosses, right, I have learned it. You know, that it is not bad to be politically smart. There are good politics, there are bad politics, and that is a subject matter to know about, right? Which maybe, you know, I was not aware before. अच्छा. So someone who's politically smart can be a person, you know, and can be a quality I can invest on. And for sure, if in case you ask me who exactly you can name now, whom you can invest for this quality, my recent boss. My current boss, not recent, you know, to put it precise. I believe. ठीक है. Got it. So I believe you know. 5 समझ गया. तो ये जो 5 चीजें हैं, ये वैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए होता है कि आप में वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप देखते हो आसपास की पूरी दुनिया में आपको दिख रही हैं, राइट? ताकि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच पाओ, राइट? मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यही है, या फिर एज एन एंड पॉइंट यही है, या फिर मोरल यही है कि जो आप बाहर दिख रहे हो आप में वो है कि नहीं है. Okay. गॉट इट. ये 5 चीजें आपको क्या लगता है जब आप जाके घर बैठ के सोचते हो कि ये 5 चीजों में से मेरे में क्या है, ताकि कोई मुझ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा घुमा. समझ गया, I got your point. लेट्स थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, राइट? आपके ऊपर अगर हम पैसा लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? आप में ऐसा क्या है कि हम पैसे लगाएं आपके ऊपर? आई एम हार्ड वर्किंग लाइक एनीथिंग. ठीक है. अगर मैं कहीं पे भी, यू नो, जो भी इक्का दुक्का थोड़ा मोड़ा मैंने अपने लाइफ में अचीव किया अभी तक, ठीक है, द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू हार्ड वर्क. ओके. कि या तो कर दो या बेहोश हो जाओ, ऐसा है. अच्छा, ऐसा है कि मतलब if in case it takes hard work, so I will do it until, man, that is something which I have learned from my school days. कि अगर मैं रात को एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, so I will do it until that last nail is being fixed at right place. मैं सुबह 6 बजे 7 बजे कितना भी बज जाए या फिर 1 घंटे में हो जाए, I keep doing it unless I find the finest product of it. Right? As I've already mentioned before, कि either I do it and I do it with, you know, core of my heart, with all my due diligence, right? Or I don't do it. Means वो आधा अधूरा काम चलाऊ काम, I cannot do it. So yes, I believe that I'm hard working, and you know, there is yet a lot to explore. ठीक है. Inside me, which can make me more. ठीक है. Right? So that is what, yes, I am. Second, honesty means it's like it is something which I believe the world should decide for me, that whether or not I am honest, maybe on a point of given situation, or maybe on a point of anything, you know. So I believe this is a quality which I find very important, right? And I would like people to see me honest, and I try my best to be honest, right? So yes, second. Third one is jugaad, right? So that is more of smart work, right? So you know, either you can be more of hard working. मैं आपको काम दिया जाए, आप कर सकते हो वो चीज कि जुगाड़ करके, या फिर थोड़ा जुगाड़ करके, you know, I would rather go to the roots of it. So not a very you know, जुगाड़ू person, but yes, when it comes to the intellectual smartness, which has to be endorsed to that particular thing, yes, I do it with all my due diligence. अब मेरे पास जितना उतना use करता हूँ for sure. So the third one is being answered. The fourth one, which I told is go-getter attitude. Yes, you know, and that is something which hard work is something, you know, that nurtures this attitude. Okay. Right? It's like, if in case this is go-getter attitude is a plant, then hard work is water to
to this. Right? So yes, this is there. And the last point which I told is, Last was why are we always forgetting the last point? And last The last person which I told about is bosses आपके ना आपके bosses. Yes, the politically smart politically factor. smart. Correct. So the politically smart factor for sure. You know, I started it from scratch, right? And have improved, and I have yet to improve it a lot. Political smart अभी इतना ज़्यादा नहीं हूँ. Yes. If in case you ask me out of 10, I'm not 10. You're not 10. Which means I have yet to learn. Yuan is my name. Yuan is your name. Yes. ये बड़ा क्यूट है लड़का हमारा. कौन सी क्लास में आप अभी? What? You're in which class? I'm KG2 class. You're KG2. KG2 class. It's still Greenwood High. Still Greenwood High. That's your school's name. Yes. Bye. कैसे हैं टीचर कैसे हैं आपके? Teachers are different like my KG1 teachers. हाँ. अच्छा किसी को पसंद करते हो आप? Who's your favorite teacher? My KG1 teacher. KG her name is? Yes. Is she cute ना? She's Sarita ma'am. Sarita ma'am, she's cute ना? She's Rita, ma'am, right? Rita or Shrita? She's Sarita ma'am. Sarita, Okay, okay. Sarita, मतलब ma'am. she's cute, right? Yes. हाँ, है ना? You like her ना? Yes. And what's your girlfriend name? Girlfriend name. नहीं अपने this पापा one को नहीं. देख रहा है. आपकी girlfriend बता दो. Will not say it to your dad. Come on. Yes. Your girlfriend name is? Girlfriend name is. Girlfriend नहीं है? Why? I don't know what it This age kid. This age, अच्छा bye. Bye Ivan. this age kid also understand that you should not reveal your girlfriend's name. तेज हो गया आजकल के बच्चे यार.